Can the Multan Sultans continue to dominate in spite of losing what seems to be half their side? Welcome to the Shiny Side. I'm your host Faris और मेरे साथ आज हैं उमर बशीर ह्यूस्टन से और इमरान असलम हैं बहरीन से। इमरान, किस तरह देखने हैं आप मुल्तान सुल्तान्स को? मुल्तान जो है वो पिछले 3 फाइनल्स खेली हैं, दो उनमें से हारी हैं ऑफ कोर्स लास्ट 2, लेकिन दे फ्रॉम अ टीम दैट वाज स्ट्रगलिंग व्हेन दे केम अर्ली ऑन, दे हैव बिकम अ प्रीटी डोमिनेंट साइड इन द पीएसएल ओवरऑल। आई थिंक ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि पिछले 3 सीजन में तो दे हैव डेफिनेटली बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, राइट? और गिवन द फैक्ट कि 3 फाइनल्स खेले हैं, डेफिनेटली द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम। एक स्ट्रॉन्ग कोर था which was built around रिजवान and a few other players. अब obviously रिजवान is still there, लेकिन जो काफी I think as we'll talk through in the show, I guess जो बाकी इनके players lose किए हैं इन्होंने, that probably will have a big impact on them this season. So it will be interesting to see how they go about this season without a few big names in their squad. Yeah. And Omar, before we get into the cricket itself, I think Multan is also known to be progressive in different तरीकों में। इस दफा they're the first franchise to have a female GM. I think Haya something is the name of the woman. And then they also have a female bowling coach, Catherine Dalton UK से जो आई हैं, वो उनकी bowling coach हैं। आज कुछ वीडियोस आनी शुरू हुई हैं कि वो टीम के साथ काम कर रही हैं। अब्दुल रहमान, who's a seasoned local domestic coach, वो उनके coach हैं वैसे। Heather Azad used to be the GM of the company, but he's moved on now. So again, changes काफी हैं इनके। आप किस तरह देख रहे हैं मुल्तान के स्क्वाड को? I think the squad has changed a lot, as Imran mentioned. I think there's some good players that came in too. So yeah, as we'll discuss them over the next few minutes. Like the biggest news was the coach and the bowling coach and the GM. So it'll be interesting to see क्या dynamic रहती है और how that goes. Definitely very different to anything we're used to in general in cricket, but absolutely for PSL. But gee, well done to Multan Sultans for that. I think very quickly अगर हम देखें पिछले सीजन में इनके जो 4 स्टार प्लेयर्स थे वो थे रिजवान हिमसेल्फ, राइली रूसो, कैरन पोलार्ड और एहसानुल्लाह एंड अब्बास आफरीदी। उनमें से 3 अब स्क्वाड में नहीं है। So Rizwan is there and Afridi is there, but Riley Russo now is the captain of Quetta. पोलार्ड भी चले गए आगे और एहसानुल्लाह अनफिट है अनफॉर्चुनेटली, वो खेल नहीं फिट होंगे। अगर आप रिजवान को देखें, जो लास्ट टाइम ही वाज द टॉप स्कोरर इन द पीएसएल, 550 रन्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 140, एंड देन अब्बास आफरीदी 23 विकेट्स, टॉप विकेट टेकर थे लास्ट टाइम पीएसएल के, उनका 9.4 का उनका इकोनॉमी था। सो इट्स क्वाइट ऑड अगेन इमरान के चेंजेस ज्यादातर उन टीम में आपको नजर आते हैं जहां पे परफॉर्मेंस इनकी खराब रही हो, like Karachi or Quetta, and but like यहाँ पे it's a bit odd. I just think कि उनके सारे जो स्टार प्लेयर्स थे, 5 में से 3 जो है वो है ही नहीं उनके स्क्वाड में। It is very surprising, especially Russo and Pollard. I think दोनों जो हैं काफी big loss होगा मुल्तान के लिए, and it is, you're right, I think surprising कि इन्होंने जो इनका एक core था, and given how strongly they have been performing the past 2-3 seasons, it is surprising कि इन्होंने उस core को retain करके आगे चलने का plan क्यों नहीं किया। I'm just putting the squad up, Omer. So initial thoughts, अगर आप squad को देखें, again I think if you compare to Islamabad preview, the all-round list is quite short. आफ्ताब इब्राहिम को ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, हम भी ज्यादा नहीं जानते, लेकिन the point is कि again it seemed like a lot of I would say decent names in the batters list. Having said that, a lot of them will be playing together for the first time. So Omar, how do you see the squad? I think it's overall, if you just look at the squad, it looks pretty decent. I think compared to हमने जो बाकी टीम्स का किया है रिव्यू, ये बैटिंग का जो इनके पास ऑप्शंस हैं वो काफी अच्छे बिग नेम्स हैं। इफ्तिखार हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, डेविड मलान, हेनरिक्स, रिजवान ऑफ कोर्स, शहजाद, तो जॉनसन चार्ल्स, तो आई मीन काफी लोग हैं। तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स देयर। डेविड वाइली इज डिसेंट। बॉलर्स में यू कैन आर्ग्यू कि शायद कोई international big name nahi hai. Recent uske Chris Jordan, obviously, he's a T20 specialist. Dahani has been good over the years in recent past. Abbas Afridi aapne kaha ki wo last season ke wicket taker the highest wicket taker. So I think it's a good squad overall, looking good to me. Imran, your view on the squad and also how big a blow is Ehsanullah, given he was the second highest wicket taker in the tournament. So Ehsanullah का ना होना काफी बड़ा, यहाँ पे आप Ehsanullah को ऐड कर लें, and this was a super strong bowling attack, I think. हाँ बिल्कुल, आई थिंक स्क्वाड ओवरऑल तो बहुत स्ट्रांग है। अगर एहसानुल्लाह से बात स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली जो थोड़ी सी मे बी आपको एक वीकनेस नजर आ रही है वो बॉलिंग में नजर आ रही है। अब्बास आफरीदी डेफिनेटली वेरी स्ट्रांग, दहानी हैज हैड अ गुड रिकॉर्ड, लेकिन ये मोहम्मद अली, फैसल अकरम एक्चुअली में तो बिल्कुल अननोन कमोडिटीज हैं। उसामा मीर आल्सो हैज नॉट बीन इन वेरी गुड फॉर्म। सो बॉलिंग इस वक्त एक थोड़ी सी वीक लग रही है कंपैरेटिवली स्पीकिंग। सो एहसानुल्लाह डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है।
आपने ज्यादा अगर जिक्र नहीं इनकी किया दोनों ने, लेकिन मैंने इनका स्पिन अटैक में भी वीकनेस में लिखा है बिकॉज ऑफ ओसामा मीर एंड हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेस. I mean, I so think obviously PSL circuit pe he's probably one of the top spinners, right? Lekin yes, carry on, Imran. Sorry. उस स्पिन में ऑब्वियसली अब एक ही ऑप्शन है. अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट मोहम्मद अली एंड फैसल अकरम, बट कम ऑप्शन स्पिन में. बट अगर इफ ओसामा मीर कम्स इनटू फॉर्म, इट विल बी, आई थिंक, एक तो मुल्तान को बहुत फायदा होगा, दूसरा पाकिस्तान जो हमें एक स्पिनर की जरूरत है उसका भी, उसकी तरफ भी फायदा हो सकता है. वो फॉर्म में बैटिंग ना ही अगर आए तो इनकी देखें तो ना ही आए तो बेहतर है मेरे हिसाब से. लेकिन anyway, I guess the other thing to keep in mind is a lot of the guys in their batting also tend to bowl a bit. So Iftikhar Ahmed, of course, Ifti Chacha probably is one of the better spinners in Pakistan. Then ये तैयब ताहिर भी जो है थोड़ी बहुत गुगली वगैरह कराते हैं. खुशदिल शाह is a left armer who does all right in the PSL as well, left arm spin से अपनी. डेविड मलान भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेते हैं. So there's quite a few people here जो I guess who अपना 5th-6th बॉलर का रोल प्ले कर सकते हैं. उमर, हम 11 की तरफ आते हैं. अब दिस इज द 11 जो मेरे हिसाब से इनकी बनती है. नाउ देयर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन विद द बैट, बट आई हैव गॉट मोहम्मद शहजाद, अफगानिस्तान ओपनर, ओपनिंग विद रिजवान एंड देन उस्मान खान. इन्होंने लास्ट ईयर कोई 120 बनाए थे एक 70-80 बॉल्स में. इवन दो सीजन ओवरऑल वाजंट ग्रेट, बट क्लियरली पोटेंशियल एट टॉप बॉटम में. डेविड मलान अगेन इज वेरी स्ट्रांग T20 प्लेयर. देन इफ्ती, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर. इस बैलेंस में इनकी थोड़ी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप लंबा हो रहा है, बट द assumption is कि guys like Ifti and Tayyab Tahir and Malan and one or two more spinners can combine for the 5th bowler role. किस तरह देखते हैं आप इस 11 को, and anything you would change? I think it looks good. Initial look. I think Usman Khan ने open की थी, right? Batting last. जी, इन्होंने ओपन भी किया है, वो मिडिल ऑर्डर में भी आए हैं, बट जी, you're right. Okay, हाँ, I think Shahzad at the top is great with Rizwan. So I think that's a solid, explosive start. मैं Malan को ऊपर लाना चाहूँगा क्योंकि he'll be the anchor here, and I think then there's those big hitters around him. I think it looks good, लेकिन I think depend करेगा कि उसामा मीर, David Willey का क्या bowling form चल रही है. They may have to add an additional bowler, a full bowler to pick up for that. वो एक नजर आ रहा है option. वरना, yeah, I think it looks like a fairly balanced 11, and it looks like a good team. इमरान, मेरे जो टेम्पटेशन हो रही है इसको देखिए कि मैं एक्चुअली ओपन करूं शहजाद और मलान से, मलान बीइंग अ लेफ्टी, एंड रिजवान को 3 पे लेके आऊं. बट रिजवान ऑब्वियसली लाइक्स टू बी एट द टॉप. तो हाउ डू यू लुक एट द 11 एंड स्पेसिफिकली ये जो मैं चीज कह रहा हूं, रिजवान एट 3? आई थिंक 11 काफी स्ट्रांग, ऑब्वियसली 11 है. बैटिंग इनके पास काफी डेप्थ है बैटिंग में, इवन बैकअप बैटर्स भी काफी हैं. I think Rizwan would prefer to open, and I would keep Rizwan as an opener. He's been doing well. Highest run scorer था पिछले PSL में, और good strike rate as well, 140. So I think it would okay. But then Malan probably can be a bit of a floating role in the lineup. ठीक है, अगर आपका Rizwan falls early, then Malan can come in and then anchor the innings through. अगर Shahzad out होता है, then you can keep Rizwan in and you can bring the hitters around him. So I think Malan का थोड़ा सा floating role हो सकता है. But if an early wicket falls, maybe you want to bring Malan in at 3 to kind of anchor the innings. So it's a floating role, but I would open with Rizwan and Shahzad. I think it's a good combination to open. I think for this, we have one more option to put in a foreign player, right? So I think Raza Hendricks. But the thing is, Hendricks is an opening batsman, so I wasn't sure. I mean, Usman Khan की जगह आप इसको लेके आ सकते हैं, top order batsman हैं. But you're right. And उसके अलावा, if there was a strong bowler or some kind of an all-rounder, I would have put them in, right? But I think वो भी इनके पास ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा. Like Chris Jordan भी हैं technically. हाँ, तो मैं वही कहने वाला था, आपने Chris Jordan को भी 11 में नहीं किया, तो वो I think. I mean, आप तैयब ताहिर की जगह Chris Jordan को खिला सकते हैं. He can also bat a bit. So that's another way of. I think Chris Jordan would be a good addition to the 11. Okay, so you guys were saying bring Jordan in, perhaps leave Tayyab Tahir out. क्योंकि देखिए बैटिंग आई थिंक स्ट्रांग इनफ है. अगर आपने एक फॉरेन प्लेयर और लेके आना है तो प्रॉब्ली बॉलिंग को स्ट्रांग करने का ज्यादा केस बनता है. एंड कीप इन माइंड कि जॉर्डन भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, विली भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. So okay, good stuff. Sounds good. I guess just to highlight again, मैंने जिक्र पहले भी किया है, but the people they've lost this time, it's quite a list, right? It's Shan Masood, Riley Russo, Tim David Miller, Kieran Pollard, Anwar Ali, and Ehsanullah. Ehsanullah to injury, the rest are either not playing the PSL or not in the 11. So again, I think it'll be almost like captaining a new team for Rizwan, right? That's literally how the change is going to be. So interesting to see how this plays out for them. Omer, आपकी prediction मुल्तान के लिए 3rd, 4th time final अपना खेलेंगे? हाँ, they look like a good team. Top 4 में तो definitely है, and I think they're looking good to get into the finals. लेकिन आपने वही कहा, नई टीम है, can they all come together pretty quickly?
Rizwan is known to be an energetic, passionate guy. So I think the boys can rally around him. That'll be the big thing to see. Looks like a very good squad and a very strong 11 with options. Yeah. Imran? नहीं, I think definitely मैं उमर से agree करूंगा. I see them going forward in the tournament. Top 4 में तो definitely आएंगे. I think I would give them a very high chance to go into the finals as well. And जो आप लोग देख रहे हैं, if you have a view कि जी इनकी क्या 11 होनी चाहिए, तो please leave a comment and like the video, subscribe to the channel, and we'll be back with some more previews. So in the meantime, stay tuned to the shiny side.